Signature Prime Time, your city, your issues. Brought to you by Signature Global. Every Monday. आपका शहर, आपके मुद्दे. Signature Global द्वारा आपके लिए लाया गया प्रत्येक सोमवार. Namaskar, Salam, Sat Sri Akal, Vanakkam. We are back again with a fresh new episode of Signature Prime Time brought to you by Signature Global, where we give you news, information and lots more about what's happening in Gurugram. My wardrobe for this episode is sponsored by Shopper Stop. You can catch the episode at our YouTube channel, on our Facebook page and on our LinkedIn page. अगर आपसे ये वीडियो छूट भी जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिए या फोन का स्पीकर ऑन कर लीजिए. आप खाना खाते या बनाते, जॉगिंग, रनिंग या वॉकिंग करते हुए, ट्रैवल करते हुए या और कुछ भी करते हुए इसे सुन सकते हैं. आप सिग्नेचर प्राइम टाइम पॉडकास्ट को earshot.in पर भी सुन सकते हैं. इसके अलावा spotify.com, Apple पॉडकास्ट, Google पॉडकास्ट और जियो सावन पर सिग्नेचर प्राइम टाइम पॉडकास्ट भी सुनने को मिलेगा. ट्रैफिक ट्रायल एट राजीव चौक, रोड मैप फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, survey on unsafe stretches for cyclists to fix issues soon. Details of all these and much more in this bulletin. Stay tuned. The Gurugram Traffic Police has reduced crisscrossing of traffic. It has set up dedicated waiting areas for vehicles as well as pedestrians at Rajiv Chowk on a trial basis for 3 days. The changes have been made to help decongest the junction on the Delhi-Gurgaon Expressway to ensure safety for both motorists and pedestrians. The Deputy Commissioner of Police, Ravinder Singh Tomar, said that during the trial period, waiting areas would be created for vehicles and lane streamlining will be taken up to ensure smooth traffic flow and prevent dangerous crossovers. These steps are expected to enhance pedestrian safety. इसमें 3 दिन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ग्राउंड पे तैयार की और उससे हमें लग रहा है कि हमारा प्रयास वो सफलता की तरफ जा रहा है. तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको भी दूर किया जाए. इसलिए 1 सप्ताह का समय हम लेके चल रहे हैं क्योंकि राजीव चौक एक बहुत बड़ा चौक है, काफ़ी व्हीकल्स आते हैं. तो जो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे डिज़ाइन को या हमारा जो ट्रायल चल रहा है जिसमें से कोन की या आइलैंड्स बनाने की बात है, कोन्स के द्वारा हम बना रहे हैं, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने में दिक्कत आती है. तो इसलिए हम 1 सप्ताह का समय लेके चल रहे हैं कि थोड़े थोड़े जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो हम सही से कर पाएँ और ट्रैफिक बहुत स्मूथली चले. और हमारा जो ये प्रयास है, एनजीओ जो ट्रैक्स कंपनी है वो हमारे रोड सेफ्टी ऑफिसर्स, हमारी पूरी ट्रैफिक पुलिस के जवान से लेके इंस्पेक्टर एसीपी तक सभी लगे हुए हैं. तो जो प्रयास है वो जनहित में है. लोगों को यहाँ सुविधा रहे, कोई एक्सीडेंट ना हो, लोग अपने गंतव्य स्थान को ठीक प्रकार से जा पाएँ, कम समय में अधिक दूरी तय कर सकें. ये हमारा प्रयास है. Traffic officials said they will reduce the lane width of carriageways with plastic jersey barriers in such a manner that merging and crisscrossing of traffic coming from Sohna Road, Mini Secretariat and the service lanes of Delhi-Gurgaon Expressway is reduced and pedestrians have a shorter distance to cross from one end to the other. The jersey barriers and the traffic police with the help of members of an NGO and road safety officers will set up a drop and pick-up area for taxis, autos and buses. This waiting area will be set up on the left-hand side of Rajiv Chowk, just about 30 to 40 meters before the junction on the service lanes of the expressway. According to a report submitted to the District Road Safety Committee in August last year, made by the WRI India, Rahagiri Foundation and Nagaru, there were 23 road fatalities recorded at the junction during 2017 and 2020. रिपोर्ट में बताया गया कि इंटरसेक्शन पर सिग्नल फ्री मूवमेंट के कारण पैदल और साइकिल से चलने वाले लोगों के एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है. रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट किया गया कि नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट अंडरपास बहुत बुरे हाल में है. लाइटिंग ठीक नहीं है, सफाई नहीं है और अंडरपास भी सेफ नहीं है. इसी वजह से बहुत कम पैदल या साइकिल से चलने वाले लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं. एक्सपर्ट्स ने कहा कि सिग्नल इंस्टॉलेशन होना चाहिए ताकि गाड़ियों की स्पीड पे चेक रखा जा सके, जिससे पैदल सड़क पार करने वालों को एडिक्वेट टाइम मिल सके. The District Health Department has decided to take help of private companies for tuberculosis treatment by introducing adoption programs through corporate social responsibility. Dr. Keshav Sharma is the Deputy Civil Surgeon for tuberculosis treatment in the district. He said
that we have been focusing on different initiatives to improve treatment of TB in the district. In January, we started treatment of latent TB for household contacts of those with pulmonary tuberculosis so that they don't suffer from the disease in the future. Now, for the first time, we are trying to engage corporates to adopt the TB treatment program, which will help us in early detection of the cases. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 से अब तक टीबी के लगभग 7,000 केसेस गुरुग्राम में रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से अराउंड 168 to 180 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के रेगुलर पेशेंट्स हैं। इसमें से 10% केसेस बच्चों के हैं। टीबी के बारे में जो है प्राइवेट जो CSR फंड होता है कंपनीज का, उनके माध्यम से जो है पेशेंट्स को अडॉप्ट करने का सिस्टम स्टार्ट किया है और टीबी जो डिपार्टमेंट है उसके लिए टीबी के पेशेंट्स के लिए वो कंपनीज क्या क्या हेल्प कर सकती हैं उसको लेकर के हमारे सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, उनकी डायरेक्शन और उनके सहयोग से हमने एक प्रोग्राम किया था 24 फरवरी को, जिसके तहत हमारे गुड़गांव की लगभग 50 कंपनियां जुड़ी हुई थी और उन 50 कंपनियों में हमने यही डिस्कस किया था कि टीबी के प्रोग्राम को वो अडॉप्ट करें, जिससे कि जो भी टीबी के पेशेंट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, लगभग 7,000-7,500 के आसपास हमारे पेशेंट होते हैं, उनको एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिल सके और अदर कोई रिक्वायरमेंट है टीबी से रिलेटेड वो भी उनको मिल सके। जैसे बहुत सी कंपनियां ऐसे फूड के प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो वो एडिशनली न्यूट्रिशन के लिए फूड सप्लीमेंट भी उनको दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे और कई कंपनियां कोई लैब के में असिस्ट कर सकता है, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो कोई वैन डोनेट कर सकती हैं, जिससे कि वो उसी वैन के थ्रू हम उस वैन पे टीबी के बारे में स्लोगन्स और क्या क्या सिम्टम हैं वो सब लिखवा करके उसके थ्रू हम जगह जगह कैंप लगा सकते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि उससे टीबी के बारे में सबको पता भी चलेगा कि टीबी में क्या क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से जो है इसमें जल्दी से जल्दी हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। Tuberculosis is a bacterial disease that can be treated with a combination of antibiotic drugs. The official said that patients with MDR-TB are immune to the first line of drugs and need the second line of toxic drugs. Sharma said that the treatment for multi-drug resistant TB continues for over 18 to 20 months and costs up to rupees 18 lakh, which is paid by the government. But help is needed for further spreading awareness. In the district, a screening is done, especially for children under 5 years living in houses where someone is already suffering from TB, to find out if a child has active TB. The Haryana Water Analysis Authority will put together a complete roadmap to improve the groundwater ranges throughout the state within 3 months. The HWRA has already divided the whole space of the state into 7 classes, primarily based on groundwater circumstances, marking 1,948 villages as severely groundwater pressured and 1,093 villages as low groundwater pressured. Groundwater stress is the ratio of groundwater withdrawal to its recharge. In severely stressed areas, unsustainable groundwater consumption impacts groundwater availability and groundwater dependent ecosystems. In the meantime, the HWRA labelled 333 villages as potential waterlogged and 88 as severely waterlogged. That means the groundwater has nearly reached the floor. This situation is detrimental to the structural integrity of buildings and root progress. अब प्लान ये हो सकता है कि गांव में ग्राउंड वाटर के सरप्लस या डेफिशिएंसी को रिव्यू किया जाए ताकि अथॉरिटी परिस्थितियों को बेहतर बना सके। HWRA के चेयरपर्सन केशनी आनंद ने कहा कि हम लोग हरियाणा के लिए एक वाटर प्लान तैयार कर रहे हैं। ये हर गांव के हिसाब से तैयार किया जाएगा ताकि पानी की कमी या बाढ़ दोनों ही हालत में वाटर स्टेबिलिटी आ सके। डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट अलग से गुरुग्राम के 163 गांव के लिए वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार कर रहा है, जिसमें अटल भूजल योजना के तहत ग्राउंड वाटर लेवल्स को रिचार्ज करने पर फोकस होगा। The 163 villages across the 4 blocks of Gurugram have been identified and categorized as red villages, that is either low groundwater stressed or severely groundwater stressed, by the HWRA as they witnessed the maximum drop in the groundwater levels in the past 1 decade, from 2010 to 2020. According to the data of HWRA, in Patodi block, some villages such as Bhora Kalan with -18.85 meter and Binola with -14.35 meter have witnessed maximum fluctuation in groundwater levels in the past decade. Gurugram is a dark zone district
and it has been seeing a reduction in the groundwater levels for the past few years. According to HWRA, 98 of the 200 villages in Gurugram are under the severely groundwater stressed category due to over-extraction of groundwater. The Gurugram Traffic Police, the Municipal Corporation of Gurugram, and the Gurugram Metropolitan Development Authority will conduct a survey in April to identify stretches that are most unsafe for cyclists and come up with solution. अधिकारियों ने कहा कि वो पहले ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। उसके बाद उन स्पॉट्स को विजिट करके रोड सेफ्टी सर्वे किया जाएगा जिससे एक्सीडेंट्स के कारण का पता लगाया जा सके और उनके सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकें। Deputy Commissioner of Police of Traffic, Ravinder Singh Tomar said that during a meeting on traffic management with MCG and GMDA officials last week, the traffic police highlighted the importance of cycle tracks in the city. It was jointly decided that a survey of stretches where cyclists are most likely to meet with accidents needs to be carried out in the next 2 to 3 weeks so that the requisite changes can be made to reduce fatalities. Stretches such as NH48, Sohna Road, Gurugram Faridabad Road, Golf Course Road, Southern Peripheral Road, Old Delhi Gurgaon Road and Pataudi Road have the highest number of accidents and fatalities, as they are the most frequented by cyclists. In October 2020, the city's first cycle track was made on Netaji Subhash Marg. Since then, the GMDA has built cycle tracks on stretches such as the Bijwasan Rezangla Chowk, Maharana Pratap Chowk, Atul Kataria Chowk and Hamilton Court Road. As per GMDA's long-term plan, the city will have 800 km of cycle tracks by 2035. India's leading real estate group, Signature Global Group, received the occupation certificate for its 6th affordable group housing project, the Serenas, located in Sector 36, Sohna, south of Gurugram. It is spread across 9.77 acres, offering 1,304 units. The project is bang on Delhi-Mumbai Corridor and designed by Padma Bhushan architect Hafeez Contractor. सिग्नेचर ग्लोबल की जर्नी में एक और माइलस्टोन अचीव करते हुए मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज द सेरेनाज के नाम से जो प्रोजेक्ट सोहना में 9.77 एकड़ का था, जिसमें 1304 यूनिट है, उसका ओसी हमें मिल गया है। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के ऊपर है। दूसरी बड़ी बात, जो आर्किटेक्ट हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर, उनका ये सिग्नेचर में पहला प्रोजेक्ट है। अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग के सेंस की बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें सिग्नम 36 के नाम से एक रिटेल हब भी है और रिसेंटली इसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ एक हमने इन्फिनिटी मॉल भी लॉन्च किया है। यहाँ पर रहने वाले जितने भी रेसिडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये मॉल एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा। हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करते हुए इस कोरोना जैसे टफ टाइम में भी इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी की है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो क्वालिटी, उसका प्रॉपर ध्यान रखा है। द सेरेनाज के कस्टमर्स को मैं फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो क्वालिटी सिग्नेचर ग्लोबल ने आपसे कमिट की थी, उसको हम डिलीवर करने में सक्षम रहेंगे। This bulletin is an initiative to bring you information, insight, news and lots more about what's happening in Gurugram. Here's how you can be a part of this. We would like to hear from you. You can record your ideas, thoughts and feedback by dropping an email to signatureprimetime@gmail.com or send voice or video messages on the WhatsApp number 8800903007. Please mark the WhatsApp message as Signature Primetime and identify yourself and your location. My wardrobe for this episode is sponsored by Shopper Stop. Stay tuned, keep watching, stay safe. मिलते हैं अगले हफ्ते सोमवार को। Signature Prime Time, your city, your issues. Brought to you by Signature Global. Every Monday. आपका शहर, आपके मुद्दे। Signature Global द्वारा आपके लिए लाया गया प्रत्येक सोमवार।